Hello students, Jai Hind, Vande Matram. Once again welcome back to the class of Ravi sir, the easiest and finest way to learn the concepts of mathematics from standard 9 to 12th. Students, in our today video lesson of standard 10th mathematics chapter 6 triangle, we are going to learn the basic concepts of similarity of triangle with example. Students, before starting today video lesson, if you are new to this channel, just subscribe and don't forget to hit the bell icon. Right students, if you done, so let us start the video about triangle. Right, so first of all let us see the introduction of triangle. Students, we have studied about triangles and many of their properties in our earlier classes. हमने अपने अर्लियर क्लासेस मीन्स स्टैंडर्ड 9th में हमने ट्राइंगल्स के बारे में और उसकी प्रॉपर्टीज़ जो होती है, डिफरेंस ऑफ ट्राइंगल्स होते हैं, उसकी स्टडी ऑलरेडी किया हुआ है. इन क्लास 9th वी हैव डिस्कस अबाउट द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल इन डिटेल. 9th स्टैंडर्ड में हमने ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंस के बारे में भी डिस्कस किया था और उसके रूल्स के बारे में भी. वी नो दैट टू फिगर्स सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट. हम जानते हैं कि टू फिगर्स को हम कॉन्ग्रुएंट कब बोलेंगे? इफ़ दे हैव द सेम शेप एंड सेम साइज़. अगर उसकी शेप और साइज़ सेम होती है उन फिगर्स की, देन दोज टू फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट्स. इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस अबाउट फिगर विच हैव द सेम शेप but not necessarily the same size. Right students, two figures having the same shapes and not necessarily the same size are called similar figure. In particular we shall discuss the similarity of triangle. हम इस चैप्टर के अंदर भी सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल का डिस्कस करेंगे. विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन मेज़र द हाइट्स ऑफ माउंटेन. और इसके थ्रू हम माउंटेन की हाइट्स क्या होती है, यू कैन से अबाउट माउंट एवरेस्ट की हाइट भी फाइंड कर सकते हो. और वी कैन मेज़र द डिस्टेंस ऑफ सम लॉन्ग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट. और अर्थ से कोई लॉन्ग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, सपोज करो मून है या अदर कोई प्लैनेट्स है, उसका भी हम डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं. राइट स्टूडेंट, नाउ अबाउट सिमिलर फिगर. इन क्लास 9th वी हैव सीन दैट सर्कल हैविंग सेम रेडियाई आर कॉन्ग्रुएंट. जिन सर्कल के रेडियाई सेम होते हैं दो सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट सर्कल. ऑल स्क्वायर विद द सेम साइड्स लेंथ आर कॉन्ग्रुएंट and all equilateral triangle with the same side length are congruent. Geometrical figure with having same shape but different sizes are called similar figure. Keep it in mind students this point. Geometric figure having same shape same हो but उनकी size अलग हो, those figures are known as similar figure. Two congruent figures are always similar but two similar figure need not to be congruent. congruent figure को हम similar figure बोल सकते हैं but similar figure को congruent figure नहीं बोल सकते. Let us see example. Any two line segment are always similar but they need not to be congruent. They are congruent if their length are equal. Two line segments को हम similar बोलेंगे बट उसको congruent नहीं बोलेंगे. हम उसको congruent कब बोलेंगे? जब दोनों ही लाइन सेगमेंट की लेंथ इक्वल हो, देन दोज लाइन सेगमेंट्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट. सेकेंड, एनी टू सर्कल्स आर सिमिलर बट नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट. दे कॉन्ग्रुएंट इफ देयर रेडियाई आर इक्वल. दो सर्कल सिमिलर सर्कल होते हैं बट कॉन्ग्रुएंट सर्कल नहीं हो सकते बिकॉज जब तक उनकी रेडियाई इक्वल ना हो. एनी टू रेक्टेंगल आर सिमिलर. टू रेक्टेंगल सिमिलर हो सकते हैं बट नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट. कॉन्ग्रुएंट के लिए उनके जो साइड्स की लेंथ होनी चाहिए वो इक्वल होनी चाहिए. एनी टू स्क्वायर्स आर सिमिलर. दो स्क्वायर सिमिलर हो सकते हैं बट कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते बिकॉज कॉन्ग्रुएंट होने के लिए द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द स्क्वायर शुड बी इक्वल. नाउ द नेक्स्ट इज सिमिलर पॉलीगॉन. Two polygons of the same number of sides are said to be similar if. दो polygons को हम similar polygons बोल सकते हैं if their sides are, their corresponding angles are equal. और उनके corresponding angles जो हों वो equal होना चाहिए and the length of their corresponding sides are proportional.
और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की जो लेंथ होनी चाहिए प्रोपोर्शनल मीन्स रेशियो में होना चाहिए, सेम रेशियो आना चाहिए। थस इफ़ टू पॉलीगॉन, सपोज करो हियर इज बिन पॉलीगॉन, कौन कौन से पॉलीगॉन है, वी आर कंसिडरिंग ए बी सी डी ई एंड अदर पॉलीगॉन वी आर कंसिडरिंग पी क्यू आर एस टी आर सिमिलर। तो सिमिलर कब होंगे, एज पर द कंडीशन दियर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मीन्स एंगल ए जो होगा वो एंगल पी के इक्वल होना चाहिए, एंगल बी शुड बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी equal to angle R, angle D equal to angle S and angle E equal to angle T. And what is another condition? The length of their corresponding sides are proportional, means AB by PQ is equal to BC divided by QR is equal to CD divided by RS is equal to D divided by ST. In that case you can say that these two polygons are what? Congruent. Similar figure, not congruent, similar. If two polygon A B C D E and P Q R S T are similar, we can write A B C D E. This curved line is a symbol of similarity, is similar to P Q R S. Here the symbol stand for is similar to. Understand? Because students, here in this figure you can see that measure of angle D is equal to measure of S, measure of angle E is equal to measure of angle T, measure of angle A is equal to measure of angle P, and measure of B is equal to measure of Q, and measure of C is equal to measure of angle R. Right students, here angles are similar, and if you consider the proportionality of sides, so AB divided by PQ, the value of AB divided by PQ is equal to the value of BC divided by QR, and the value of CD divided by RS is equal to value of D divided by ST. Right students, in this way you can say that these two polygons are similar polygons. Here has been some notes about polygon. It should be noted that for similarity of polygon with more than 3 sides, अगर ऐसे polygons हों जिसकी 3 sides, more than 3 sides हो, मीन्स ट्राइंगल नहीं हो, कोई और भी ज्योमेट्रिक फिगर हो, the two conditions given in the definition are independent of each other. हमने दो कंडीशन स्टडी किया और दोनों कंडीशन अलग है, एक कंडीशन रिलेटेड टू एंगल से और एक कंडीशन रेशियोज ऑफ साइड से. राइट स्टूडेंट, either of two condition without the other is not sufficient for polygon with more than 3 sides to be similar. right, इन दो के अलावा, ठीक है, और भी कोई कंडीशन अगर आती है वो सफिशिएंट नहीं होगी. इन अदर वर्ड्स, इफ़ द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ टू पॉलीगॉन्स आर इक्वल, अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू पॉलीगॉन इक्वल होते हैं बट लेंथ ऑफ दियर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट प्रोपोर्शनल, और उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की जो लेंथ है वो प्रोपोर्शनल नहीं आ रही, मीन्स सबकी वैल्यू सेम नहीं आ रही है, द पॉलीगॉन नीड नॉट टू बी सिमिलर. तो उन केस में पॉलीगॉन सिमिलर नहीं हो सकता. सिमिलरली, इफ़ द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ टू पॉलीगॉन्स आर नॉट इक्वल बट लेंथ ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग आर प्रोपोर्शनल, अगर एंगल इक्वल नहीं है बट प्रोपोर्शनलिटी, साइड्स की जो प्रोपोर्शनल वैल्यूज़ है, रेशियोज़ जो हम ले रहे हैं वो इक्वल आएगी, उस केस में भी वो सिमिलर पॉलीगॉन्स नहीं हो सकते. सेकेंड नोट, ट्रायंगल्स आर स्पेशल टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन. ट्रायंगल्स जो है वो स्पेशल टाइप का पॉलीगॉन होता है. इन केस ऑफ ट्रायंगल, इफ़ आइदर ऑफ टू कंडीशन गिवन इन द एबो डेफिनेशन होल्ड्स, देन अदर होल्ड्स ऑटोमेटिकली. अगर ट्रायंगल्स की हम डिस्कस करते हैं, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होते हैं और इसके अलावा और भी कोई कंडीशंस वैलिड है, तो वी कैन से दैट द ट्रायंगल्स आर पॉलीगॉन. इट मीन्स स्टूडेंट्स, हियर इट इज़ बीन क्लियर दैट अगर कोई भी टू पॉलीगॉन्स को हम सिमिलर बताना है तो उनके दो कंडीशंस कंपल्सरी होने चाहिए. दोज कंडीशन आर मीन्स corresponding angle should be equal and the proportionality of sides, corresponding sides should be equal. Right student, now the next point is similar triangle and their properties. First definition, two triangles are said to be similar. two triangles को हम similar बोलेंगे, ऑलरेडी हमने स्टडी कर लिया है. let us remind these things. corresponding angles आर इक्वल. फर्स्ट कंडीशन क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. एंड सेकेंड क्या है,
corresponding sides are proportional. Right students, here we are considering two triangle ABC and DEF. So corresponding angle as per the condition, the definition of similar triangle, as per the definition the corresponding angle should be equal, means angle A is equal to angle D, angle B is equal to angle E, and angle C is equal to angle F. And second condition, corresponding sides are proportional, means AB divided by DE is equal to BC divided by EF is equal to AC divided by DF. So we can note it about these things. In the later part of this chapter we shall show that the two conditions given in the above definition are not independent, right? In fact, if either of two conditions holds, then other holds automatically. So any one of the two condition can be used to define similar triangle, right student? And what about note 2? If corresponding angles of two triangles are equal, then they are known as equiangular triangle. Okay students, on the basis of today's video lesson, let us practice few questions. The examples about fill in the blanks. Figure of same size and same shape are similar and congruent. Similar and congruent. Every congruent figure is always similar. All circles are always, what is? All circles are always similar. Square having sides of same length are congruent as well as similar. Circle of same radii are congruent and different radii are similar. Two or more polygons are congruent if they have sides of same length and equal measure corresponding angle. Right students, these are the most important fill in the blanks for today's video lesson, right? Okay students, now moving to the next question. Fill in the blanks using the correct word given in the brackets. All circles of same radii are dash. All circles of same radii are congruent. Second, all circles of different radii are always similar. All rhombus are dash, neither similar nor congruent. All equilateral triangles are similar. The reduced and enlarged photograph of an object made from the same negative are similar, right? Now let us see the third example. State true or false. All congruent figures are similar. Yes, all congruent figures are always similar. Second, all similar figures are congruent. No. So this statement is false statement. Third, equilateral triangle are similar. Yes, equilateral triangles are similar. Yes, this is true statement. All the quadrilateral are similar. False, because we know that there are so many types of quadrilateral with shape and size. So shapes are also different and size will be different. So all the quadrilateral are not similar. So this is false statement. Fifth, all the rectangle are not similar. All the rectangle are not similar. Right students, this is true. Two photographs of the same size of the same person, one at the age of 10 years and other at the age of 40 years are similar. False. Right students, two photographs of the same size of the same persons, one at the age of 10 years and other at age of 40 years are similar. Okay students, here we are completing today's video lesson. I hope you have understood about the basic concepts of similarity of triangle. For more video lesson of this chapter, keep watching your channel Ravisirjee Maths. Students, thank you once again for watching this video till the end.